Now friend, we will see here a new topic which name is here given, World Trade Organization, which is also known as WTO. So friend, I hope you have heard this word because you have already learned about in 9th standard, but at that time you have given a little bit information about WTO. So now friend, today we will see here about World Trade Organization in detail. World Trade Organization was established on 1st January 1995 by the member nations of United Nations. Its headquarters is located in Geneva in Switzerland. Its objectives are as follows. So friend, on 1st January 1995, World Trade Organization was established by the member nations of the United Nations and its headquarters is located in Geneva in Switzerland. Now friend, we will see here objectives of the World Trade Organization. You can see here objectives of World Trade Organization. So first of all, we will see here first number, to remove obstacles influencing global trading. To remove such an obstacles or barriers which are influencing global trading. यानी कि ग्लोबल ट्रेडिंग में जो भी ऑब्स्टिकल्स या फिर जो भी बैरियर्स प्रॉब्लमेटिक होते हैं तो उनको रिमूव करना, तो वो उनका एक ऑब्जेक्टिव है. सेकंड नंबर, टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड. यानी कि फॉरेन ट्रेड के लिए देश की खुद की जो कंपनीज होती है उनको जो प्रोटेक्शन पॉलिसी मिली होती है तो उनको रिमूव करना, तो ये उनका एक ऑब्जेक्टिव है. थर्ड नंबर, टू कोऑर्डिनेट विथ ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. डू कोऑर्डिनेशन वर्क विथ ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. फोर्थ नंबर, टू सॉल्व द ट्रेड related disputes arising in the world. Whatever trade related disputes are arise in the world, give a proper solution between two countries or nations. So friend, we have seen here objectives of the World Trade Organization. Now friend, we will see here functions of World Trade Organization. So first number is given here, to set up a required structure for implementation of agreement related to multinational trade and agreement related to it. यानी कि जो मल्टीनेशनल ट्रेड होते हैं उनके लिए जो एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट ठीक से करवाना और साथ में जो भी उनका स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर को सेटअप करवाना, तो ये उनका फंक्शन है. सेकंड नंबर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशंस फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड. फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल और एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशंस. दैट मीन्स फ्रेंड्स, वी कैन से World Trade Organizations work as a mediator. Third number, WTO encourages unbiased international trade. यानी कि जो WTO है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड को कि किसी भी प्रकार का भेदभाव के बिना वो एनकरेज करता है कि जिसके कारण वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है तो वो सब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. Fourth number, different nations follow their own national policy. It observes them and suggests required improvements. यानी कि हर एक देश को अपनी नेशनल पॉलिसी होती है तो वो नेशनल पॉलिसी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करती है और साथ में जब ज़रूर लगे तब उनको इम्प्रूवमेंट करने की जो सजेशन है तो वो भी
WTO देता है। So friend, we have seen here objectives and functions of the WTO, that means World Trade Organization. Impacts on Indian economy. India is a member of this WTO organization since its inception. So, what will be the impact of this organization on India, or which type of benefits would India acquire are discussed below. So, from the beginning of the WTO, India is a member of this organization, and so that which type of impacts of this organization on India and which type the benefits India may get, we will discuss here. So first of all, here given India's contribution to world trade was 5%. Our exports have increased tremendously due to increase in international trade, and as a result of it, India's contribution in world trade has increased to 1%. There was 5% contribution of India in the world trade. Due to increase in international trade, our exports have increased tremendously, and as a result of that, India's contribution in the world trade has increased to 1%. यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के कारण जो एक्सपोर्ट हमारी कंट्री का होता था तो वो बढ़ गया, और उसका बेनिफिट ये मिला कि वर्ल्ड ट्रेड में जो कंट्रीब्यूशन इंडिया का होता था तो वो 1% तक पहुंच गया। सेकंड नंबर, बीइंग मेंबर ऑफ WTO, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स ऑफ आवर कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड। यानी कि WTO के मेंबर होने के नाते हमारी कंट्री का जो रेडीमेड क्लोथ्स का जो इंपोर्ट होता है तो वर्ल्ड में वो बढ़ चुका है। थर्ड नंबर, एज ए मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज़ बीन एबल टू इंक्रीज export of its agro products. Our country's agro products has been increased for export in the world. Fourth number, due to increase in export, pressure on imports has reduced and foreign investment has been increased in foreign exchange. यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण इंपोर्ट के ऊपर जो प्रेशर था तो वो अभी थोड़ा सा हट गया है, और उनका रिजल्ट ये मिला कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में बढ़ता गया, और उसका रिजल्ट ये मिला कि जो फॉरेन एक्सचेंज है तो वो भी उसमें भी इंक्रीज हम देख सकते हैं। Thus, as a member of World Trade Organization, India will not only get above mentioned but benefits also has to comply with some conditions. That means friends, India will get many benefits due to member of World Trade Organization, but we have also follow some conditions of the World Trade Organization. यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर होने के कारण हमें ऊपर की जो सब कुछ जो बेनिफिट्स है तो वो मिलेंगे, मगर साथ में जो भी कंडीशंस है तो वो भी हमें फॉलो करनी होगी। इट इज़ स्पेशली डिपेंडेड ऑन हाउ फास्ट इंडिया इंक्रीजेज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ एंड हाउ डेवलप कंट्रीज ट्रीट इंडिया। यानी कि ये सब जो है तो वो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ और जो डेवलप कंट्रीज़ है तो वो इंडिया के साथ कैसे बिहेव करती है तो उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। नाउ फ्रेंड, वी विल सी हियर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, sustainable development is the development which meets the needs of present generation
without compromising with the ability of future generations to meet their own needs. So friend, here given the definition of sustainable development. So sustainable development means such type of development in which whatever needs and necessities satisfied by present generation, all these needs and necessities will available for our future generation without any compromising. It's called sustainable development. यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इस प्रकार का वो डेवलपमेंट है कि जहाँ पे जो भी नीड्स और नेसेसिटीज़ अभी प्रेजेंट जनरेशन को अवेलेबल है तो वही सब नीड्स और नेसेसिटीज़ हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी अवेलेबल हो। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। Thus, the idea of sustainable development developed because of extreme effects on nature near human habitation and man-created cover, for example, environment. The idea or concept of sustainable development is developed due to the extreme effects on nature nearby human habitation and man-created cover, for example, environment. यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो आइडिया को डेवलप किया गया है तो वो उस कारण उसकी ज़रूरत हुई क्योंकि जो नेचर के ऊपर जो ह्यूमन हैबिटेशन की जो असर होती है और ख़ास करके एनवायरनमेंट की, तो उसके कारण जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो आइडिया है तो वो रखने की ज़रूर पड़ी है। द वे एंड द स्पीड विथ विच प्रेजेंट जनरेशन इज डेवलपिंग, it cannot be maintained the future. Which path or ways and speed which choose by present generation for developing activity, so it cannot be maintain our future. यानी कि प्रेजेंट जनरेशन ने डेवलप करने के लिए जो स्पीड और जो रास्ता अपनाया है तो वो हमारे फ्यूचर को ठीक से मेंटेन नहीं कर सकेगा। यानी कि हमारी फ्यूचर जनरेशन में जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल होने चाहिए तो वो शायद नहीं हो सकते। तो इसलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है, तो उसको ज़रूरत अभी खड़ी हुई है। देयर इज़ अ फियर दैट लग्जरियस विच प्रेजेंट जनरेशन इज एन्जॉइंग मे नॉट बी देयर फॉर फ्यूचर जनरेशन। वॉट एवर लग्जरीज एंड facilities are available for present generation, there is a possibility it may be not available for our future generation। यानी कि अभी जो प्रेजेंट जनरेशन को जो फैसिलिटीज़ मिलती है तो वो शायद हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है तो उनके लिए शायद ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर इज अ ट्रिमेंडस डिक्रीज इन नेचुरल रिसोर्स due to economic development and their quality is also deteriorating. The natural resources are decreased due to economic development as well as the quality of these natural resources are also decreased. In this condition, there is a need to change the idea of development. Due to such type of condition, we have to change our idea for the development work. Idea of sustainable development is studied because of present development and effects of it on environment. So friend, we are studying here about sustainable development. Due to the present development and effects of it will be affected to our environment. Now friend, we will learn here which type of strategy we should adopt for the conservation and preservation of natural resources. So first number is given here. The renewable natural resources like cultivable farm, forests, water resources, etc. should be used in such a way that their quality is maintained, and non-renewable natural resources like coal, petroleum, minerals, etc. should be used judiciously.
whatever renewable resources which we are using, so we should use in such a way we can maintain its quality, as like a cultivable farm, forests, water resources, etc. And which are non-renewable natural resources, as like coal, petroleum, minerals, etc. we should use in judicious way, so that we can maintain it for our future generation. Second number, industrial location should be decided on this basis of leisure transportation cost. A sincere attempt should be made to achieve eco-friendly development. यानी कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशन होता है तो वो हमें ऐसा डिसाइड करना चाहिए कि जहाँ से कम जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो वो लगे, और साथ में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इको फ्रेंडली डेवलपमेंट जो है तो वो हमें अचीव करना है. थर्ड नंबर, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन वे should be utilized in different ways, such as different irrigation systems are utilized for more than one purpose. For example, producing electricity, flood control, transportation, etc. So friend, here we should think about such a type of resources which can be used in different ways by more than one way, and we should satisfy our purposes. For example, producing electricity, फ्लड कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा. यानी कि जो भी रिसोर्सेज है तो उसको हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि वो दूसरी बार उसका यूज हो सके. फोर नंबर, नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड. Control should be laid on unplanned disposal of industrial waste, poisonous chemicals, increasing slums, etc. So friend, we should not waste our natural resources, as well as we should also control on which are unplanned disposal of industrial waste, poisonous chemicals, increasing slums, etc. यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है तो उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, और साथ में जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉइजनस केमिकल्स और जो स्लम्स है तो वो इंक्रीज हो रहा है, अगर वो अनप्लान यानी कि बिना प्लानिंग के होता है तो उसके ऊपर जो कंट्रोल है तो वो रखना चाहिए. फिफ्थ नंबर, स्ट्रेस शुड बी लेड on use of non-conventional energy resources such as solar and wind energy. So, we should give importance to non-conventional energy resources such as solar and wind energy. So friend, we have seen here a strategy for conservation and preservation of natural resources. Now friend, we will see here the last topic of our lesson, which is given here: steps taken to protect environment. For the first time, Earth Conference was organized in 1972 at Stockholm in Sweden. So friend, the Earth Conference was first time organized in 1972 at Stockholm in Sweden for the discussion of Earth's environment. Thereafter, from time to time, conventions and camps have been organized for protection of environment at the global level. So friend, after this conference, time to time the conventions and camps have been organized for the protection of our environment at the global level, in which it was decided to take different steps for environment protection. In this conference, some decisions were taken for the protection of the environment. India is also involved in these global efforts. Government is also making different efforts at the national level. For example,
So friend, our country is also involved in these global efforts, and our government is also making some efforts to the clean environment at the national level. So there are given some examples for the environment protection. First number, information about pollution condition of different cities of nations is presented. The condition of the pollution in main cities of our countries is presented. Second number, central and state pollution control boards have been established to control pollution. To stop or control the pollution, central and state pollution control boards have been established in our country. यानी कि जो पॉल्यूशन है तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो फाउंडेशन है वो हुआ है. थर्ड नंबर, 5th June हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एनवायरमेंट डे इन द वर्ल्ड. To spread awareness about environment, 5th June has been declared as Environment Day in the world. यानी कि एनवायरनमेंट की जो प्रोटेक्शन है तो उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हर एक ईयर की जो 5th जून है तो उनको एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से सेलिब्रेशन होता है, ताकि जो कॉमन पीपल है तो उनको भी एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की जो अवेयरनेस है तो वो उनको हो. फोर्थ नंबर, इन इंडिया गवर्नमेंट पास्ड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981. Our country has been passed Air Pollution Control Act in 1981 for the protection of environment. So friend, Air Pollution Control Act was passed in our country in 1981 for the protection of the environment. Fifth number, international agreements have been signed for deteriorating level of ozone, disposal of nuclear waste and maintenance of biodiversity. So friend, our country has been signed in international agreements for the control of ozone as well as disposal of nuclear waste and मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यानी कि हमारी कंट्री ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में साइन किया है और वो इसलिए कि जिसके कारण जो ओजोन है तो उनका लेवल बना रहे, साथ में जो न्यूक्लियर वेस्ट है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो सके और जो बायोडाइवर्सिटी है तो उनको भी हम प्रॉपर मेंटेन कर सके. तो इसके लिए हमारी कंट्री ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट में साइन की हुई है. Thus, conservation of environment is everyone's responsibility. If we do not control pollution, no doubt the life on the earth will be doomed soon. So friend, the conservation of environment is everyone's responsibility. यानी कि environment की conservation करना या फिर उनका protection करना तो वो हर एक की responsibility है. अगर हम ये pollution को control नहीं करते हैं तो बेशक हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है तो वो एक दिन ज़रूर नष्ट हो जाएगी. So friend, we should be aware about the protection of our environment and conservation of our environment so that we can save our earth.